Hello, everyone. Welcome to the Heal, Align, and Thrive show again, a space to learn and grow. Before we introduce today's guest, let me begin with a movement, a pal that many people listening will recognize. They will relate to that. Sometime हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हम आउटसाइड बहुत सक्सेसफुल होते और इनसाइड समथिंग फील्स हैवी। वो कोई फ़ियर और ऐसी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर होती है कि हम आउटसाइड बिल्कुल सक्सेस करियर भी अच्छा चल रहा है, फैमिली में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन हम फ़ील अपने आप को अलाइन नहीं कर हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है, माइंड कंसिस्टेंटली बिज़ी रहता है किसी न किसी चीज़ में और अपने आप को हम कभी-कभी क्वाइटली मैं ठीक हूँ। For some, this moment shows up as a burnout, and I think a few years ago I was same way. For some, this came as a anxiety or physical pain. But for a few brave souls, this moment becomes the start of real healing. So today's guest is someone who did not ignore that moment. She built a method, movement, and a mindset from it. So today's guest, बिफोर इंट्रोड्यूस करने से पहले जिन्होंने मैं उनसे जब बात करी तो आई जस्ट गेट सो मच इंस्पिरेशन शी इज वेरी यू नो जिन्होंने इनके प्रोसेस में रहते हुए और वो प्रोसेस को अपना पर्पस बना लिया और शी इज अ लाइफ डिजाइनर होलिस्टिक हीलर and founder of Divine Mom Hub. So just to be clarified, mom is not stand for mother only. Mom meaning M for mindfulness, for ownership, and for mastery. And this is not a gender label. It is a life framework designed for working professional, parents, leaders और जो individual भी है जो emotional clarity और inner stability चाह रहा है. So with 25 years of experience in mind, body, and healing, she did a lot of subconscious transformation and personal development she is doing. And she has helped thousands of individual release emotional and physical suffering. And mostly हम जब ऐसी situation होती है तो we just came on the pills. But she is changing that one. She is also author of the book Find My Me, joining and coming back from that's mostly books for clarity, identity, and inner peace. And her mission to clear and to create 10,000 purpose driven coaches. Wow, that's a big and impact almost 1 million lives. And please join me in welcoming Vandana Raj, also known as a Vindi Kohli, to the Heal, Align, and Thrive shows. So, Vandana ji, welcome. Namaste, Sat Shri Akal. So, hello, Preeti. Thank you so much. And all the people, all the viewers who are watching this beautiful podcast. And thank you so much for giving such a beautiful introduction. And I'm so glad to be on this platform. It was just that Preeti ka connection मुझे बहुत ही different तरीके से मिला. I went for my retreat, for my spiritual personal development retreat to Kurg, and there I met someone who has spoken about Preeti a lot, Nilesh, and that's how I came across to Preeti. And thank you, Preeti. And I think it's a wonderful job. What a wonderful, wellness program what you have started and helping so many women and so many people around. So thank you so much for giving me that opportunity to be on your platform. Yes. If you feel connected, that's like वो कहते हैं ना कि ऑरा होता है तो मिलते हैं, but still we can connect to that. So I think that's a thank you so much for coming. So before starting, वंदना जी, आप कहते हो आप अक्सर में आपका लाइफ का हर मोमेंट में कहीं न कहीं हम जब चेंज होते हैं तो कैसा कुछ न कुछ हमारा मूवमेंट होता है। Correct. तो आपकी लाइफ में अगर वो कौन-सा मोमेंट था जब ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं रही बल्कि लिव्ड ट्रुथ बन गई? जो हीलिंग का देखने का नज़रिया है, वो आप हमसे वो Yeah, sure, sure. Thank you so much. And it is such a beautiful question. So heal the mind, heal the body. But ये moment आई कैसे? There are many incidents. My life was always a roller coaster ride, and so it was the choices for me many times. But yes, I would like to share this this specific this incident that
So there was a time, I think I can tell you, probably 2004, 5, I think 5, 6. So I slipped from my that house stairs for 4, 5. So I just dum 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 dum, and Uh-huh. I broke my tailbone. So Wow. it was raining that time. I just did whatever the person does. It go to the doctor, get it checked, get it X-ray, MRIs, everything. The treatment started. So all those things we were doing it. So it's not that I have ignored it, but I never realized that I was doing everything outside of it. So outside I was doing whatever was required. Like it was required to go to the doctor, it was required to get the physiotherapy done, to get all kind of medication done. But I didn't rest properly because that was the very crucial time in my life, and I just recently became from housemaker to a working mom, and so it was a very challenging period for me to settle down myself in the outer world, in the working front. Mhm. So probably somewhere some things got ignored, and slowly, slowly, there was a time, 9, 10, like it was almost 4, 5 years, and it became chronic. So then I was most of the time in a pain. And you know what I realize is that sometimes when you are not healing from inside and you are just trying to heal from outside, you are not actually, coming out of the pain completely. This is what my experience talks about it. And I was doing, like, I was going for Brahma Kumaris. I was with the Brahma Kumaris for more than almost 7, 8 years. I was volunteering them, going for my meditations every morning, very ritualistic. But Mhm. then, when there was a time when I became bedridden, and then doctors started telling me, your problem is so crucial that it might happen that you will be paralyzed. आप हो सकता है paralyze हो जाओ, या आप हो सकता है कि बोवल खराब हो जाए और आप, मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू हैव एवरीथिंग इनसाइड। तो मुझे ऐसा मैंने Oh. ऐसी ज़िंदगी तो कभी भी नहीं, ना तो सोचा था, ना कभी माँगी थी। Mhm. मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो मेरे बिकॉज़ बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, प्रीति, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि जो भी होता है ना, वो किसी न किसी रीज़न से, मैं हमेशा ही समझती हूँ और आज भी समझती हूँ, ये सब कुछ रीज़न से ही Mhm. मुझे लगा कि अ, तो मुझे अभी भी याद है दैट नाइट माय डॉटर, मिडल डॉटर, शी इज़ अ क्रिकेटर, शी इज़ अ रणजी प्लेयर ऑफ कर्नाटका। तो वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक है, और मुझे आजकल वो लंदन में है, वो अपना पीजी करने गई थी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो अभी वही आजकल है वो वहाँ पे। But Mhm. she actually told me that, Mom, you are doing, but you are not regular first, and you are not accepting it. Somewhere she said certain things, and then sometimes it clicks. Otherwise, you don't even listen. You are so headstrong in your thought process that we don't listen, the people are saying. But at that moment, actually, I just felt that I need to surrender myself. And वो कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट रेडी है तो teacher up. So that night I was watching some video on YouTube, and suddenly Sadhguru's video came. Jaggi Vasudev Sadhguru. And Okay. in those days, Sadhguru was not at all famous. Like Sadhguru का किसी को अता पता नहीं था। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था नाम। मैं बात कर रही हूँ 11-12 की, Mhm. 2011-11 Mhm. की। मैंने उनकी वीडियो देखी और मेरे जैसे दिमाग में आ रहा था, जैसे ही मुझे उसने बोला, मैंने सोचा यार योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है, योगा करना है। आई एक्चुअली लाइक्स ओके, मुझे योगा करना है, एंड सडनली आई सॉ हिज वीडियो एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट योगा in Mhm. engineering. Mhm. Believe me, I was so bad, but I don't know. I always have a courage, but the courage always comes with the choices. So I just felt कि मेरे को register करना है, मैंने within second I registered it. Now I don't know, क्योंकि मैं उठ Mhm. नहीं पा रही हूँ. Doctors are saying आपने ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना. You have to lie down, and then doctors do, है ना? So this Yeah. was the same situation with me. But today, if I tell you in the later, we will just have the conversation. Oh my God, you have to believe doctors, but then you have to believe yourself also, you know. तो बस फिर मैं चली गई वहां पे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं उठ नहीं पा रही थी, एंड आई वाज अनेबल टू सिट ऑन द फ्लोर. सो 2, 3 गर्ल्स दे केम टुगेदर, दे
helped me to make me sit. They helped me to make me get up. But I was Mhm. pretty regular. It was 7 days program. But by the like, I still remember the first day, my patanga asana. You don't even ask me. Butterfly. Like it was like this, you know. Oh. But by the seventh day, my feet was like this. I was flapping my legs so properly. I was doing my Shishu Palana so perfectly. I Mhm. just wondering what happened. And I think with your question, I think I can relate to कि जैसे ही मैंने अपने मन में थॉट क्रिएट की, जैसे ही विचार आया और मैंने चॉइस बनाई कि मुझे करना है, और Mhm. मेरी बॉडी ने उसको एक्नॉलेज, बॉडी सपोर्ट करती है जब मैं यहाँ पे सोचती हूँ, वो मैं सही सोचूं या क्या सोचूं, तो वो मेरी बॉडी उसके ऊपर एक्शन लेती है. दैट्स व्हाट आई कैन रिलेट. Heal the mind, heal the body actually has started from there. Oh, wow. I think that's awesome. I think वह हम ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने पहले ही बोला कि वो होता है ना सही होता है। आई एम बिग बिलीवर ऑन दैट कि कभी-कभी हमें लगता है ना कि बहुत अंधेरा है, Hmm. वो जब डार्क हो जाए इट्स मीनिंग कि वो सुबह आने वाली है। मैं हमेशा वो कहते हैं ना कि जब टनल बहुत डार्क हो जाए मीनिंग वो टनल एंड होके लाइट आने वाली है। Light. या कभी-कभी हम अपनी स्ट्रेस में और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम वो लाइट नहीं देखते। हम सिर्फ़ उस अंधेरे के आस-पास ही खुद ही अपने आप को गुम कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, यहीं पे हमें लेकिन जब वो टनल खत्म होने स्टेप ही नहीं ले पाते, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। एवरीवन कैन सी दैट इट्स अ वेरी कर्स लाइक कि जिस सिचुएशन से आप उठ नहीं पा रहे और वॉक नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपने सोचा नहीं मुझे तो करना है। कहते हैं ना, it says that when अंधेरे में रहोगे, वैल्यूज तो या वैल्यू तो तभी समझ में आती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि दुख, बट सुख क्या वो दुख के बाद ही समझ में आता है. या So यस, this is हाँ, one thing. I think it's very simple. Then we just complicate in our thought process. या Mhm. कौन-सा वो ब्रेकिंग पॉइंट था या कौन-सी वो इंस्पिरेशन आपने ली कि जिससे अब मुझे नेक्स्ट मुझे अब लोगों की हेल्प करना बिकॉज़ एज़ अ सिंगल पेरेंट्स इट्स नॉट ईज़ी आई विल से दैट खुद को भी, फैमिली को भी और फिर हमने स्टार्ट करना है कि मुझे दूसरों की भी तो ये कैसे Yeah. आप I know. Nahi, nahi, thank you so much. It's such a deep question, Preeti, because first of all, I never realized when I became single in 2002, like it's been almost 23 years when I lost my husband. And I remember I went with one of my friends. So he asked me that, uh, what is the purpose of your life? I just smiled and I told him, I said, ये purpose, ये goals, bookish होते हैं, I told. I said it's, but one thing which I have realized is, Preeti, that I was, whatever the opportunities was coming on my way, I was taking it confidently and working towards it. So purpose जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे एक प्याज की तरह, जैसे प्याज में हमारी इतनी लेयर्स होती हैं. If you are doing something, you are keep doing it, so automatically those layers opens up, and then actually you see the purpose. So I was doing all these things, and the one main thing which I can tell you is about the acceptance. I just realized that when you accept your situation, whatever happening around you, and another thing is the choice. So when you are making the right choices, it's not about choice only, the right choice, the think right. So I think then your purpose becomes little more clearer to you. So now to come to this Find My Me, how it happens is that I think we all are looking to find ourselves, right? And that's how my program actually started with Find My Me. But later on, I made it Divine Moms Hub because
the inspiration is all about the women around me because I was into the fashion field. And so that the first business which I started in 2002, I had a knowledge for that because I'm a very lifelong learner kind of a person. You know, PTA today also, like I just finished my 3 days work for that conference. So I keep learning, I keep upgrading myself. So I think the fashion was the only knowledge I had at that time, and I started my fashion boutique on the brand Vandana Raj. If you search it, you will get it in Bangalore. And I think the women are the inspiration around me because I was making those women beautiful. I was creating those outfits for them. I was making, designing for them all their sexy blouses and sexy things. तो होता क्या था कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ ना क्लाइंट से ज़्यादा दोस्ती में लाइक माय नेचर वाज़ सच। तो देखो अंदर से रूट्स तो हाउसवाइफ थी, होम मेकर थी। अब बन गई थी काम ले रही है बट वो जो बेसिक नेचर थी वो नहीं गई। तो उससे क्या हुआ कि लोग मेरे पास कपड़े सिलाने से ज़्यादा अपनी अपने हार्ट को मिस डोंट नो हाउ दैट thing actually started becoming like a more a counseling kind of a thing rather than a boutique और बड़ी-बड़ी होता था कि वो बिज़नेस तो मैं कम लेती थी लेकिन मैं उनको एडवाइसेज़ देके भेज देती थी यू नो वापस। तो आई थिंक दैट्स द इंस्पिरेशन यू कैन से आई टूक इट फ्रॉम देम एंड so the main inspiration came from, oh my God, lockdown. Lockdown was the inspiration for me. So I don't I know think for many COVID is people, lockdown was a little tough time, but yes, tough financially. Yes, it was tough, no doubt in it. But mentally and emotionally, Preeti, for me, it has done wonders because after my husband, I didn't, took even one single breath properly. I was just running. बच्चों ने school जाना, college जाना, ये admission. Like there are many things were happening. So I think the lockdown when came, and recently, just 6 months before, my older daughter got married, and in January, my third daughter got married. I have three daughters, and February end lockdown started. March, my God, I just felt it's the lucky time for me. I had a breathing space. I had time for myself. I had a time for pause. And I think Mhm. that's the time when I started writing things. And that's how even you have mentioned about the book that has come from there. And that's the inspiration. I think I took it. So inspiration is my you can say solitude. My own company is my inspiration to start that. And definitely things which is happening around me. Yeah, that's a beautifully. COVID, I think, is change almost everyone perspective for Yes. life. Yes. Lot of things happen. We were, not used to, do the stuff like online. I remember that I was working on that time tech. First, I heard I was one of my team was doing the service desk work, and they were saying like, we need to work online now. And I was like, okay, what? How it will be possible? Because we need to, deploy the laptop, we need our network, this and that. But things got work out, right? And but more than that, COVID gave us a lot of different perspective, Yes. for living, for how to right now. I think अगर हम आज बिजनेस भी देखें तो कोविड के बाद हमारी शॉपिंग अगर मैं अपनी पर्सनल भी देखती हूँ तो मेरी 99% ऑनलाइन हो गई है तो दैट इज आल्सो गॉट लॉट ऑफ चेंज एंड सेम वे आवर हमारी बट बहुत से लोग उस वक़्त एक्चुअली लॉट ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मेंटल उस टाइम हेल्थ पे इंक्रीज़ उसके हुई है। बाद एग्ज़ैक्टली। या तो आई वाज़ रीडिंग वन ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च जिसमें वो कह रहे थे कि 2019 से the 2 to 3% people was looking for breathing meditations but हुँ, after that mental issue इतना ज़्यादा हो गया है कि people's almost 20 to 25% everyone looking for that stress एग्ज़ैक्टली, anxiety mental health wise. एग्ज़ैक्टली। लाइफ़स्टाइल has changed, Preeti. In fact, like if I tell you about the subject, what I took it because I was an entrepreneur, and so when lockdown came, I started analyzing things.
The best thing, I wanted to add here with this conversation, because the best thing what has happened is that, so before even my husband left us in 2002, when I came to Bangalore in, I think 1997, and that time, I joined fashion designing course because I had a lot of time and I don't want to be a kitty person. The housewives goes to the kitties and cards and all that. So I don't want to. Mhm. I always wanted to learn and upgrade myself. So I went for this learning, and there I met one uh, girl like you, and she actually used to look exactly like you, Preeti. Her name was Pinky, and also ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੱਟੀ। Yeah, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਓਹ ਮਾਈ ਗॉड! a Punjabi in Bangalore, ਕਿਉਂਕਿ I hardly get time to speak in Punjabi। ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। She introduced to me Reiki healing। Uh, Now, like, I didn't even, know this. Now you started a conversation and I suddenly it strike me. Uh, I joined it, and my husband made fun of me कि ये क्या है रे वो। मैं क्या, आपको पता नहीं है, बहुत ही कमाल की चीज़, हाथ से हील हो जाता है। ऐसे हाथ लगाओ, हील हो जाते हैं सब लोग, बच्चे और मैं बच्चों को ना, बच्चों के एग्ज़ाम बोर्ड पे रेकी करना, अपने हस्बैंड का ऑरा बनाना, like I started enjoying that। as I said that I was keep doing certain things। तो उसके बाद फिर मुझे वो इतना अच्छा लगा। I did level 1, level 2, then I did master Reiki। So I'm a master Reiki Reiki healer. So like I can teach healing to people. It's like that. But I was practicing. I was like, it was in me, and I was practicing for myself. So after my husband, the one thing which has not stopped is my spirituality, because I already entered into it. And that's like a seed which has been there. And वो कब seed बढ़ता गया और वो तभी डालती गई, like I was off and on going for different retreats, different spirituality. तो after my husband, yeah, 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 yeah. तब तक ना प्रीति, वो मेरे ना Mm, yeah, yeah. I started making the program on fashion, because मैं fashion पिछले 22, 25, 23 साल से कर, and I was thinking कि मैं fashion के ऊपर एक program। And I still remember that I went to my mentor and I asked him, he says that what you are good at। I said I am good, if मैं क्यों, how a person can find that how you are good at in something। I said I am good at my fashion because I have done so much of research study, like मैं फैशन शोज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, like मुझे बहुत नॉलेज है फैशन को लेके। तो आई सेड I'm good in that, and I am good in spirituality also, because that's the one thing which I'm working on myself। कि जब वो मैं गिरी तो मैं योगा में चली गई, फिर वो मैं ऑलरेडी हीलिंग में, ऑलरेडी मेडिटेशंस में थी विद ब्रह्मा कुमारीज, देन आई वाज विद सदगुरु, then I was with Swami Sukhabodhananda। So I was doing all those things। I said I'm good at that also। So now how to find one thing, he told me। He says, tell me, अ, जब आप किसी के साथ बैठते हो या आप किसी के साथ बात करते हो, कौन-सी, आपको कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वक़्त का समझ कहाँ चला गया? आपका वक़्त ऐसे ही निकल जाता है। एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि कोई अगर गलती से मुझे ये बोल देता है ना, प्रीति, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं मेंटली अपसेट हूँ, या मैं इमोशनली आई एम गॉन थ्रू Mhm. समथिंग और फिज़िकली, देन आई जस्ट कैरिड अवे, और मैं इतना ज्ञान बाँटती हूँ फ्री का, कि मतलब मुझे लगता है कि वो, मतलब जैसे मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है। That's how, like, that thing came. This divine moms came. No, Yeah. that's awesome. So, this is, I think, John D. Martini also. I attend his seminar. Is he actually tell ke how to find your purpose?
आपकी नीड्स क्या हैं? व्हाट यू लाइक, वी सिंपल वर्ड वी टॉल दैट लाइक FTBA, your focus, where your time, live, and you just mostly enjoy that time. So I think that's when we get that, whereas we, as you mentioned, when we talk someone, talk for healing and all that, you just don't realize how long you are sitting. So I think that's a beautifully easy way to define. नेक्स्ट है आपका जो the rhythm mind body healing system is the heart of your work, right? Yes, yes, yes. So for the working mom, how would you explain your, in simple words? And if you can share some stories for maybe women or anyone who have a long time emotionals or physical pain, how they release without medications. So if you can little bit let us. Yes. That's beautiful. I think rhythm is something which is like literally came from my heart. I would ओके मैं सिंपल तरीके से सबसे पूछती हूँ, ईसीजी करवाई Yeah, हाँ, सब करवाते हैं राइट? सो ईसीजी में क्या होता है? जब आप ईसीजी कराते हैं तो क्या होता है? सीधी लाइन आती है तो उसका मतलब क्या है? yeah, I always give that like you're done. Done, khatam. It's finished, it's over. When it is like this, the waves, up and down, and that's how they say your heart is breathing well, your lungs are okay, you are absolutely fine. So this is the rhythm. So when we lose the rhythm, and the rhythm is always about the mind and the body, so मेरी thought और मेरा action, मेरी thought, मेरी feeling और मेरा action, ये 3 चीज़ें जब तक कनेक्टेड नहीं है, तब तक रिदम नहीं आता, यू नो? तो रिदम को लाने के लिए वो एक अवेयरनेस जगानी बहुत ज़रूरी है। Now how this rhythm is come as a word to me, it's not, see, I was so much engrossed in my own world that I actually didn't know many things outside what is happening. So I remember my daughter delivered a baby boy and grandson. वो मेरे पास आया. He was like few months old, and my daughter is very perfectionist girl, and she never used to leave her child, but she was supposed to go somewhere, and she gave me a one big बड़ा फनी सा इंसिडेंट सुना रही हूँ, इतनी लंबी लिस्ट दे दी उसने मुझे ना कि ये सोने का टाइम है, ये दूध पिला देना, ये कर देना, ये नहलाना, ये मसाज, ये उसका प्ले टाइम है, ये उसका राइम टाइम है, all that she has given me a list of it, and I was supposed to tick mark that list. I was supposed to do that. पहले Mhm. तो मेरे को लगा बड़ा चंगा है, these are like हमने भी तो अपने बच्चे पाले हैं, your mind talks like that. Then I said, then as like I was working on myself, and when you start working consciously on yourself ना, तो surrendering बड़ी easy हो जाती है प्रीति. Yes. Otherwise ना surrendering नहीं करते. We don't surrender easily. But when you are conscious about it, when you are aware of certain things, when you are on journey of self ही कह लो, when you are on that journey ना surrendering easy होती है. Then you Mhm. surrender. Yeah. कि अगला रास्ता समझ में आता है, otherwise next step you don't find in that. So I was like a good student. As I said, I'm a good student. Like a good student, I was just doing it and ticking mark, and things are happening. Then the right time came. This program, because I wanted to launch it. I wanted to launch my 40 days Mandala program, and it was all ready. And that time the name was The Secrets of Accelerating Healing. But then, it was in my head कि नहीं यार मुझे एक अपना मेथड खुद बनाना है. It was going in my head कि मुझे एक मेथड अपना खुद क्रिएट करना है, एंड दैट वाज लाइक इनटू माय थिंग. तो मैंने बन सकता है. एंड दैट थॉट केम जब रात को चला गया, मैं फटाफट अपना कॉपी पेंसिल लेके आई, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. आई वाज जस्ट separating R H I literally. I said, "Oh my God, it is so beautiful. Now let me write a message." And I started writing a message. When I started writing a message, so in my message, when I was talking about it, it was coming again and again rhythm instead of Mhm. rhyme. So मैंने कहा कि yeah, that's a excellent thing. So now I would like to explain it to you what this rhythm means. So rhythm method is born such a beautiful way, and the R stands for resilience. You know what resilience is? Resilience is मैं सारे
को बताना चाहूँगी कि रेज़िलियंस होती है जैसे कि आप गिरने के बाद दोबारा खड़ा होना। आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर दैट्स द टूटने आपको खुद को समेटना दैट Yeah. इज़ कॉल्ड रेज़िलियंस। सो बेसिकली हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ अ वर्ड कॉल्ड लचीलापन। कि कैसे हम लोग वी आर सो फ्लेक्सिबल टू डू दैट। सो दैट्स द आर स्टैंड्स फॉर रेज़िलियंस एंड एच स्टैंड्स फॉर होप। सो डू यू थिंक दैट उम्मीद कहते हैं ना जगा के रखती है, उम्मीद है तो सब कुछ है लाइफ में। तो जब उम्मीद खत्म हो जाती है स्पेशली वुमेन हु आर लिसनिंग राइट नाउ, आई मस्ट टेल कि हम ना अपनी उम्मीद खो देते हैं। तो जब आप उम्मीद खो देते हैं आगे बढ़ने की शक्ति, तो वो एक जो विश्वास है कि जैसा भी हालत हो, जैसा भी सर्कमस्टांस, जिंदगी फिर से हमारे लिए कुछ तो बेहतर लाए, राइट? उम्मीद एक जो होप है वो एक रोशनी है जो एक अंधेरे में। एंड वाई स्टैंड्स फॉर yearn. Yearn means desire. So desire means Mhm. में एक इच्छा होती है, खुश कुछ तो इच्छा रखती हूँ, इज़न्ट इट? सो ये Mhm. कोई गलत नहीं है कि हमें अगर कुछ उम्मीद है ज़िंदगी से कि ज़िंदगी हमें कुछ अच्छा देगी। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ व्हाई यर्निंग एंड देन इट कम्स ट्रस्ट। आई फील ट्रस्ट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अमेजिंग टू हैव इट फर्स्ट ऑन योरसेल्फ। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन आवरसेल्व्स, राइट? तो जिंदगी पे विश्वास रखना भी जरूरी है और ये जो शरीर है हमारा बॉडी, इसकी भी एक विजडम होती है, तो आई Yeah. थिंक उसके ऊपर भी ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन आई रियलाइज कि अगर एक इंसान रेजिलियंस सीख ले, होप को एक अपना वो पार्ट बना लेता है जिंदगी में आगे बढ़ने की, देन उसको डिजायर है अपने आप को बदलने की, अपने आप को, और वो ट्रस्ट रखता है हर चीज पे, तो आपको नहीं लगता नेक्स्ट एच इज हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस तो फिर आपके पास आ ही जाएगी, इजंट Yes. इट? एंड दैट्स हाउ दैट हैप्पीनेस कम, कि हर एक का जो एक एक जिंदगी का क्या बोलते हैं, कह लो टारगेट कह लो या लक्ष्य कह लो, वो तो खुशी है ना एट द एंड ऑफ द डे। Mm. उससे ज़्यादा तो हमारी कोई और चीज़ है ही नहीं है। एंड देन जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल टू हैव मैजिक इन योर लाइफ। सो द एम स्टैंड्स फॉर मैजिक एंड दैट्स हाउ दिस रिदम द एंटायर tool is being created. So Yes, example. incidents हुए हैं, but I would like to share with you two main incidents. The one girl, she was 19 years old when she came to me, and I was little prejudiced to take her case because I heard that she has attempted twice suicide, and I was little wondering in my head कि इतना छोटा बच्चे को क्या जरूरत है. And when I saw her picture, she's so pretty, she was so beautiful, but then I said चलो ठीक है, clarity call करती हूँ उसके साथ. And Mhm. when I got the clarity call with her, Preeti, I understood that that girl had a alopecia. You know what Wow. alopecia is? Mhm. तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। सो एलोपेशिया एक ऐसी डिजीज है जो कि आपकी बॉडी के नॉट इवन सिंगल बाल, नॉट इवन इवन आईब्रोज, नथिंग, तो बिल्कुल बाल नहीं होते आपके शरीर के ऊपर। तो शी हैड दैट थिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। जब फिर मैंने उसका केस ले लिया, लाइक वी टुक दैट दैट रिदम लिंग में मैंने उसको ले लिया। मैंने बोला नहीं, हम करेंगे इकट्ठे काम। तो मैंने एक चीज जो रियलाइज की, मेरा प्रोग्राम ना रिवॉल्व करता है 3 एज के ऊपर। Mhm. अवेयरनेस, सॉरी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। तो फर्स्ट स्टेप इज द अवेयरनेस। सो पहला मेरा टारगेट था उसको अवेयर कराना उसकी खुद की प्रॉब्लम। Hmm. अंडरस्टैंड, या एंड देन द सेकंड स्टेप मेरा हो गया था उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करवाना, अवेयर करवाना एंड एक्सेप्ट करवाना। एंड तो जब मैं उसके साथ चली, एज soon as we go, we've done many therapies with her, and the main therapy which worked with her is the mirror therapy, which has really done wonders with her. So, over the time, after, in fact, after third, second session, I think second session था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको कॉल किया कि टुडे यू हैव अ सेशन, कहती वन्ना कैन आई कम विदाउट माय विग? शी यूज्ड टू वेयर विग। आई सेड आर यू ओके? आई सेड आर यू ओके? मैंने पूछा, आर यू ओके? कहती आई थिंक आई एम ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट ना, आई हैव टू। सो एंड शी केम, एंड उसके थर्ड वीक मेरा वेबिनार था। आई आस्क्ड, आई सेड डिम्पल,
मेरा वेबिनार है, वुड यू लाइक टू कम ऑन द वेबिनार एंड टॉक अबाउट योर स्टोरी? So she says, yeah, I don't mind. And she came without wig. And that was, I will send you that video. My eyes were like rolling up. I was rolled my eyes and I said, oh my God, what is this? I never knew it. With 100 people, she will come without wig. That kind of a confidence she has developed over the time. So what I realize is that her problem was not her problem, her that particular issue. Her problem was the childhood, her parents, because her parents made her conscious so much. Whenever she used to come out in front of the relatives or friends, they used to tell her, Yeah, wow. किसी को बतानी नहीं है. तुमने ये बात. Then I counseled her mom. I said, please bring your mother. That's a very touching story, which is really with me. That today she's doing a law in Dehradun, and I think this is her fourth year, and she's doing wonderfully great. That's the something amazing. And another incident I will tell you, the emotional front is one of my. She's my actually a relative come client. She is 8 years ke baad love marriage, 8 years old son. She got divorced, with someone. And when she came, she was very, very upset, emotionally broken, and she was very bitchy about her mother-in-law, about her husband, about anyone around her. Because उसके साथ मैंने 3-4 meetings की, she was only talking about उसने ऐसे किया, incident to incident. She was talking to me incident to incident. And Mhm, then we worked together. And today she's a part of Rhythm Healing. My mom's hub ki wo part hai. She is a mhm. volunteering. She actually is a volunteer in my programs, in my webinars. She takes up the counselings. So much of transformation in this 5 years in her. So that's the emotionally, like when I show her the tools and when we did practice together. So she understood that I have to change myself. I can't undo things, but I can undo inside me. I can give that forgiveness here. I can say Mhm. sorry here, you know? Yeah. So that's the thing. No, I think that's awesome. Like, as you mentioned, like, I also like in my program, I also have said that, like, until you don't accept, you will not start growth. Growth is start from awareness and acceptance. Even अगर हम बीमार भी होते हैं, तो जब तक हम ये नहीं कहते कि मुझे चाहिए कुछ मेडिसिन या मुझे कुछ भी चाहिए, तब तक एक्सेप्ट ही नहीं है, तो तब तक हम ग्रो भी नहीं। और Exactly. सेकंड पॉइंट आपने जैसे पेरेंट्स का भी पंजाब में एक आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली और समथिंग पंजाब में एक बात हुई कि एक बच्चा लेकिन हमने बच्चे को इतना क्यों नहीं ग्रो करा कि वो हम अपनी इज्जत ये वो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी उस चीज में हम बच्चों को बहुत Preeti, उस चीज पर so you know what? Why? Because parents have their own beliefs, right? Own fears. वो pass on करते हैं. That is why I say, if you have seen I have sent you my details. If you notice it, I actually cater the uh, audience is from 25 years to 45. Why? Because you have to upgrade yourself. If you are not या you are not ready to change yourself. How can you actually make change in your child's life? You cannot. So you will also carry forward the same fears, वही डर, वही गिल्ट, वही सब कुछ आप उठा के अगर लेके आते हो, तो देन इट इज सो डिफिकल्ट कि आप उस बच्चे को आगे कुछ सिखा पाओगे. सो दैट इज व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग. दैट इज व्हाई इतने आप केसेस कितने केसेस हो रहे हैं. लाइक जितना क्राइम इज लिटरली मल्टीप्लाइड नाउ इफ यू सीरियसली लुक एट. So that is why your kind of a work, what you are doing, or I'm doing in my community, there are many people are doing. I think we need to all come together and make it like a movement, so that the people should understand that there is something which they have to bring some shift, some change. या वही होता है कि इमोशनली इतने आज के इस टाइम पे हो गए हैं कि बच्चे किसी से कुछ फ्रेंडशिप की प्रॉब्लम हो जाए किसी स्कूल से फेल हो गए कहीं तो जस्ट एकदम से सुसाइड की करते हैं। एकदम से इमोशनली वो इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं कि No दे आर more. नॉट एबल टू हैंडल बिकॉज़ व कहीं न कहीं हमने वो एज़ ए पेरेंट्स वो जो साइकिल चल रहा है ना जनरेशन टू जनरेशन, कुछ चीज़ों का जनरेशन टू जनरेशन हमें साइकिल तोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा. कहीं चीज़ों पे कंटिन्यू करना बिकॉज़ हम हाँ, कहीं न God कहीं इस has चीज़ को been very डिफाइन नहीं hard. कर पा रहे हैं कि क्या हमारा कल्चर है,
क्या हम सिर्फ़ एक बिलीफ सिस्टम से एक ने बिलीव हुँ। बन दिया वही जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। लेकिन हम उस सबको अपनी फैमिली वैल्यू देके वो आगे अपनी जनरेशंस को तो कहीं न कहीं वो हमें सेपरेशन करनी पड़ेगी कि क्या फैमिली वैल्यूज़ हैं और क्या बिलीफ सिस्टम है और क्या जस्ट हम कहीं न कहीं इसी वाली बात सुनाऊँगी। कल रात को आई वाज़ टॉकिंग टू माय डॉटर, शी वाज़ टेलिंग मी समथिंग तो ना कोई होता है मैं पेरेंट्स की वजह से होता है। देन सडनली नो शी सेड समथिंग अबाउट हरसेल्फ दैट मैंने ये किया फिर मैंने वो किया। मैं कहा पेरेंट्स वी स्टार्टेड बोथ ऑफ अस स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड सी किट्टू now you know that it's parents because I am like that. That is why you did all that, you know, because that something is gone in. Because somewhere you people need to use your brain where to divorce parents. Somewhere you divorce parents, somewhere you take advice from the parents. Not every time the parents are right, you या know? Not every time. So use your intellectual intellect also. You know, that's how I teach my kids. I said not necessary कुछ मेरे से हर चीज लेनी है आपको वो लो जो तुम्हारे circumstances को सूट हो रही है and it is working for you. If it is not working for you, then it is not good. Probably for me it might have worked, but for you it might not have worked. So don't take it. So या that's I वही think the parents needs to be open. What you said. या आई थिंक माय डैड वाज़ सेइंग लाइक कहीं परमिशन लेना है या कुछ करना है, कर लेना, फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना, फिर अपनी ओनरशिप लेना कि मैंने ये डिसीज़न लिया आई एम ऑन दैट वन। Mhm. वो नहीं था कि वो हमें उनके वो उनका यही था कि एक हमें ओनरशिप की आदत पड़े, वी कैन अकाउंटेबिलिटी, वी कैन यूज़ आवर ओन ब्रेन Exactly. दैट्स अ काइंड ऑफ लाइक टीचिंग। I think that's the bringing up parents needs to give to child to create their own thought. कहते हैं ना कि so Dr. Joe Dispenza says na the cells which is fired together wire together. Have या you heard about it? I don't know. या आप ब्रेक करोगे पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, तभी जाके नई आदत, नए बिलीव्स, आप नई वायरिंग अदरवाइज यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द ओल्ड वायर। तो यही हो रहा है। तो जब वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनसे पहली शिफ्ट क्या एज़ यू मेंशन लाइक तक एक्सेप्टेंस अवेयरनेस नहीं है, तक एक्सेप्टेंस नहीं, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, तक ग्रोथ नहीं। ती जो माइंडफुलनेस, ओनरशिप है और मास्टरी है, सबसे ज़्यादा लाइक कहाँ पे लोग अटके होते हैं? और जब वो हम उसमें एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, कौन से बिग चेंजेस दे कैन या और नो दैट्स पीपल अ कैन वेरी रिकॉग्नाइज़ कि हाँ, मैं यहाँ पे अटका हूँ। सी मैं ना मुझे लगता है कि जर्नी लाइफ काफ़ी सिंपल है प्रीति, हुँ, हुँ। लेकिन हम ना हर चीज़ का जवाब ना थोड़ा-सा डिफरेंटली देखना चाहते हैं, ढूँढना चाहते हैं। अगर कोई जना सिंपली बोलता है ना, "अरे भैया बैठ जाओ।" तो ये क्या? ये कोई हीलिंग थोड़ी है। दिस इज़ नॉट हीलिंग। आँखें बंद कर लो। जस्ट क्लोज़ योर हुँ, आइज़ प्रीति। लेट्स क्लोज़ आवर आइज़। इज़ इट हीलिंग? यू नो? नो। सो जवाब बहुत सिंपल चीज़ कि अटके बिकॉज़ पॉज़। हम लोग पॉज़ नहीं लेते बिल्कुल भी। पॉज़ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मुझे जब लॉकडाउन में पॉज़ मिला, एक नया अध्याय शुरू हुआ डिवाइन मॉम्स का। हुँ, वो हुँ। पॉज़ नहीं मिलता तो ये अध्याय भी शायद पता नहीं शुरू होता कि नहीं होता बिकॉज़ मारा-मारी में तभी बोला जाता है कि एटलीस्ट अपने लिए निकालो। वी आर हुँ, सो हुँ। देयर इज़ आई वुड लाइक टू व्हिच आई एक्चुअली एक्सप्लेन इट इन माय प्रोग्राम्स बट आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रीफली टेल यू that everybody should understand very simple way that we all live in two worlds, Preeti. One is a outer world where I'm sitting in front of you talking my business social life वो सब बाहर है मेरे अंदर की एक दुनिया है मेरी सोच मेरी फीलिंग यू नो मेरे सारे ऑर्गन्स मेरी सारी बीमारियां अंदर से आती हैं बाहर बाहर एक मीडियम बनता है बट आती अंदर से है राइट मेरे सारे ऑर्गन्स अंदर है मेरी फीलिंग्स अंदर है मेरी इमोशंस अंदर है मेरे पूरी थॉट प्रोसेस सब अंदर है राइट तो मुझे पहले वो डिफरेंशिएट करना है इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड तो जब तक मैं अपनी इनर वर्ल्ड को मेरे आउटर वर्ल्ड हमेशा मेसी रहे यहाँ मेसी है तो बाहर मेसी है यहाँ अपसेट हूँ तो बाहर अपसेट हूँ यहाँ लव है तो बाहर लव है यू नो या सो आई ट्रू। थिंक द वन व्हिच यू टोल्ड मी इज द पॉज ये सब आता है पॉज करने से तो पॉज करना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन whenever you are upset or you are not liking something just take a pause like I'm running a business and it is like we are into civil construction industrial projects and
We make factories for Coca-Cola and all that, and we have architectural designing firm. Like the different segments are there, two, three, and I have some 40 odd people with me. And it's not that it's the very happy go round business. That's my entrepreneur side of it. This is my passion side of it, right? Mhm, mhm. Moments होते हैं. I have some different opinions and a different way of telling. I'm a founder of that business too. And whenever something happens, I actually go to the toilet. कि वहाँ बैठ जाती हूँ and do a भ्रमरी many times. मैं भ्रमरी करती हूँ जाके just to calm myself. और कुछ नहीं तो just आंखें बंद करके just take a 3 breaths. उसी में मैं इतनी काम हो जाती हूँ कि मेरा जो बात करने का तरीका ही बदल जाता है मीटिंग के अंदर. This Yeah. is one thing everybody can do it, you know. Yeah. So I think that's the one simple thing. As I said, everything is very simple actually, Preeti. पर हम simple नहीं करना चाहते. Yeah. ये बहुत सिंपल है. तो सिंपल इज जस्ट टू बी योरसेल्फ, बी विद इन योरसेल्फ. अपने आप को इफ आई लव माई सेल्फ देन आई विल नॉट ट्रबल माई सेल्फ. आई टोल्ड द सेम थिंग फ्यू डेज बैक टू माई डॉटर. A very beautiful. In fact, I would like to open that message and I would like to tell everybody that something very beautiful which has come suddenly, like it was a sudden thing because she asked me something and I said, just practice. She says, क्या? इग्नोरेंस क्या मतलब है? वो आपका मतलब है कि मैं इग्नोर करूँ सब कुछ? I said हाँ, करो ना। कहती इट्स नॉट ईज़ी मम्मा, इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू टू से। I said हू सेड इट्स ईज़ी? I said इग्नोरेंस वर्ड थोड़ी है, वर्ड नहीं है ना, बेटा इग्नोरेंस प्रैक्टिस है। Then I Mm, explained her. I said I stands for I choose myself first. G stands for guard your mind gently. N stands for notice the trigger without entering it. O stands for observe, don't absorb. Just observe what is happening. You don't need to absorb things within you. R stands for redirect your attention intentionally. A stands for accept that others speak from their fears, not your truth. So they say na, ki when something happens with you, always ask a question. Is it my truth or is it somebody else's fear? From there, these people are coming and giving you the advice. And N stands for no reaction is a reaction. And C mhm. stands for choose calmness over conflict. And E stands for elevate your state. I said, ये practice करनी है. So this is how I think I can just give the message to everyone. I think that's beautifully you explained. आई वाज लाइक सेइंग कि ट्रिगर जो एनएलपी पे भी मैं बहुत हम जब करते हैं उसमें हमारी जो ट्रिगर होते हैं ना वो उस सिचुएशन पे ट्रिगर जो Exactly. हम पीछे अपने उसके बिहाइंड जो सीन है ना हमारे इमोशन इट्स नथिंग टू डू द विद द सिचुएशन हमारे जो ट्रिगर हैं जब वो सिचुएशन है तो वो ट्रिगर एकदम से जो हमारे पीछे वाले ना तो वो बंदे की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है ना सिचुएशन की बट जो ट्रिगर बिहाइंड इमोशन हमने कीप करके रखे हुए ना जो हील नहीं हुए वो एकदम पे बाहर निकल Exactly. Very true. Very, very true. सो वही Yeah. वही चीज़ हम बार-बार फिर उसी पे आगे-पीछे चलते रहते हैं। वो हो गया, उसने मुझे ये कर दिया। आई वाज़ यू नो sometime I talk to client and I saw that years 20 years 25 years उसने मुझे ये बात कह दी थी वो चीज अभी तक वो ट्रिगर हमारे अंदर बड़े रहे लेकिन जब हम उनको क्लीन करना शुरू कर फिर खुद ही वो बोलते हैं यार दैट्स नॉट आई नेवर थिंक अबाउट दैट बिगनेस एंड बट this is beautifully ignorance is defined. I think this is you should post people so to understand that things ये मैं सोच रही थी एक वीडियो बनाऊँ इस पे, बिकॉज़ ये तो yeah. ना जस्ट सडनली जैसे बच्चे कुछ ना कुछ पूछते हैं एंड आप बात करते हो। मोस्टली तो मैं ना बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं देती। बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, ज़्यादा एडवाइसेज़ आपकी लेते नहीं हैं अनलेस दे आस्क यू, यू नो? तो मैं तो सिर्फ सिंपल ही मैंने कहा ये 2 चीज़ें स्पेशली जो शादीशुदा लेडीज़ हैं एंड माएँ हैं, आई थिंक द 2 थिंग्स दे हैव टू प्रैक्टिस। वन इज़ दिस IGNORS इग्नोरेंस। आई स्प्लिट इट एंड से one is this another word is that acceptance. So accept whatever happening around you. That's I think that's a beautifully. My next question was like, what is the 60-second you can tell people for to do it? And I think this is a beautifully you already give answer that.
I already given 60-second thing. So I think, yeah, I think they can just affirmations, affirm mantra, अपना मंत्रा शीशे के सामने खड़े होके सुबह 3 लफ्ज बोलो, 3 स्टेटमेंट्स टू योरसेल्फ। फर्स्ट इज आई एक्नॉलेज यू, क्योंकि हम अपने आप को एक्नॉलेज करते नहीं ना, हम अपने अंदर फॉल्ट्स निकाल चीजें नहीं होती तो हम उसके साथ अपने आप को रिलेट कर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आई एम एब्सोल्युटली different soul altogether. So first of all, that acknowledgement is important. Second thing is that you need to say, "Oh my gosh, you are so beautiful. I love you." And I do that every day. But the first thing I look at me, oh my God, today, how do you want your day to be? And the third statement they can always say is that I'm enough. That's really important. मैं जो भी मेरी सिचुएशन आज है वो आज के लिए परफेक्ट है। अब मुझे कुछ और बनाना है या मुझे कुछ और करना है, तो मुझे अब उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग दैट राइट नाउ व्हाट मी एंड यू आर टॉकिंग, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आज मैं और आप बात कर रहे हैं। हमारा पास्ट है आज, ये जो हम बात कर रहे हैं और इससे 1 सेकंड के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फ्यूचर। Mhm. That's true. So it's up to me, that if I wanted to create my future, then I need to work right now on that. Yeah, The that's past true. is gone, and then I should just keep the past aside. I'll just learn and I will just create a future right now. That is why in every book, her books, her cheez mein likho, present mein raho, present mein. So the present is all about this. Yeah. Yeah, I think one other thing I was I think some video I was saying, like, we always get tell kids to do focus, but we never tell how to focus. So I think, that we, the acceptance, acknowledge, awareness, that's all is part of focus. So I think we all say like stay in the present, but how to stay in present, we don't let people, sometimes explain, right? So it's not. So before we start a little bit of a small rapid fire round, लास्ट वन क्वेश्चंस लाइक आपकी बुक है जो फाइंड माय मी आइडेंटिटी बियॉन्ड रोल्स कैन यू लिटिल बिट एक्सप्लेन फॉर इन maybe in 1 second what was that book and you know जो आपने Okay. इसके बारे में बोला है कि रोल्स के बियॉन्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं Yeah, so I think I would not take much. I think I have taken a lot of time. हाँ, time तो नहीं ज़्यादा हो गया? नहीं नहीं Book. And don't you think everybody, in fact, I'm asking, या yeah? So if you see the me is into commas, basically अपने आप को ढूंढ रहे हैं. And I remember this book when I was writing. So I was always used to write from my childhood because जब मैं लिख रही थी मैं या काफ़ी मेरे जर्नलिंग आंसू थे, you keep healing yourself unknowingly, you don't know. ये बुक है बहुत सिंपल, it's a kind of my story, but then this book tells about that how the small triggers which you just spoke about it, Preeti, that the triggers, कई बारी हम बचपन में बहुत छोटे-छोटे ट्रिगर्स ले लेते हैं, तो मैंने अपने बचपन से शुरू करके हर फेज के बारे में ना एक-एक चैप्टर इज़ फॉर 2 पेजेस चैप्टर, बिकॉज़ बहुत बड़ी थी बट आई कंसोलिडेट एंड मेक इट स्मॉल कि भैया दुःख भरी, हमेशा वो कहते हैं ना, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ कि माय लाइफ इज़ लाइक अ मूवी, समटाइम्स। तो अब वो भी यस एक चॉइसेस होती हैं कि अब चलो गम तो आ रहा है, लेकिन अब उसको खुशी में कैसे कन्वर्ट करना है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट इज हाउ रेजिलियंस कम्स इनटू पिक्चर। तो ये बुक जब मैंने लिखी थी, तो ये बुक इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, how like a person can discover themselves. And also in this I have given very beautiful two bonus tools. That is excellent what you are just asking me, 60-second something. I think if they read the book they will get wonderful way forward the purpose of their life from that bonus. That's something amazing in this book. And in every chapter after that I have written, I summarized that chapter. So let's say if I'm like, and I always, and this is one of my student told me that ma'am, when I opened the book it was like a deja vu, because I didn't know what to do today. And I was just wondering what to do, and I just opened the book and I got my answer. I said, how come? So like, for example, now I opened this page and then suddenly the page came
that it felt like God Himself was present. So Kadambri's wedding was like magic. It felt like God Himself was present and had taken over each task. Every guest felt the presence of a supreme power, which was miraculous. So now sometimes I don't know, okay, what is happening, and you feel, oh my God, God is present. So I'm taking that message from here. So that is Mhm. something amazing in this book. And she told me, I never even knew it. And then I started doing it. I kept this book on my bedside. So in the morning, I get up and I say, Acha, how my day needs to be. So then just say, abhi lesson learned aa gaya. We Mhm. all are innovative internally. Emotions needs to be tapped properly. Innovations can be discovered through emotions. So like that. So that's how this book is all about. I still remember Preeti that my daughter said, "Mummy, copyright को दे देते हैं." एंड मैंने बोला कि कॉपीराइट को दे दिया ना तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। और ये बुक आज 2nd 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ सकता है, इतनी सिंपल इंग्लिश है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश खुद नहीं बोलती। Yeah, तो that's आई यूज़ द वर्ड्स वेरी सिंपल व्हिच आई वांटेड टू put those words in my book, in my even in my videos, in my programs. I do not use the language which is like the people will open a dictionary and start understanding it. So it needs to be simple. yeah, yeah. And with this, I would like to tell everybody कि हम लोग pause की बात कर रहे थे. So before we end, so let's everyone open the phone right now. Let's see what's the time in your phone right now. 9:29. 9:20. So 9 to 9. So it's a rhythmic words. Normally, whenever I pick up the phone, either it is 11:11, it is 4:4, it is 9:19, 9:29, it is any. So whenever the pause is that after half an hour, 1 hour, just pick up your phone, or you see any number which is rhythmic, or you are working on your Excel and see some number, just take a pause. Yeah. Make that trigger actually. That's we shared that the simple way, like, the same way I just say, like, start counting in your room what the things. Just start looking the things, counting the things. Either Counting. close eyes, just listen, three things. I just use that 5, 4, 3, 2, 1 technique, like, Right. five things to see, four things to So feel, three things to let hear, two things, smell, and one thing to taste it. So that way you come back to the present moment. 5 Okay. elements. Yes. Yeah, yeah. So I think that's a beautiful, Vandana ji, like, just to look at your numbers and see that things like, Yeah, anywhere. And then that time, just take a pause, look inwards, close your eyes, look inside. Oh, I am present. That's it. That's the simple way. so thank you, Vandana ji. क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे थे, लेकिन टाइम काफी हो गया, so we Right. just need to stop here, and in future I think definitely we will bring it back, and thank you so much. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. So I think we will also connect together and we'll bring one program together for all these people who are the viewers today. Yeah. Right. Thank you so much. And one last before we leave that, like, where is people can find you? We will share your websites and anything, and anything, where you just like your program is online or it is like in person, how people can find you. Yeah, so there are two ways. One is that I do one-on-one counseling. If they wanted to have a one-on-one with me, so then they can register it. I will share those links with you. And another is that I have a silver membership program. I have a app Mhm. which is called Divine Moms Hub. They can download that app. And in that app, there is every day, there is some different feeds, some different messages, motivation, healing related, and whatever the workshops are coming. So if they download the app, they will get to know the workshops are coming because I keep doing webinars. So I keep coming online, my 3-day workshop, 7-day workshop, because I believe in this 7 days concept a lot because 7 days is something which is amazing to heal yourself. As I said, that 7 days वो inner engineering has changed me. And मुझे वो पिक्चर याद तो 7 दिन में काफी बदलाव आ जाते हैं लाइफ में तो I have created one workshop on 7 days that how you can change your psychosomatic diseases. So that if they download that app, I will send you the link. That is wonderful. And they can always ping me, DM me, my Instagram link or on my website or on email. So they can always reach to us anytime. Yes. Yeah.
Thank you so much, Chandra ji. Thank you so much for sharing your journey, your wisdom, and your lived truth with us today. And Thank you so but much. I feel this conversation was not just information, like informative. It was deeply grounding. And what truly stands out for me, healing is not about fixing ourselves. It is about remembering who are we, Yes, absolutely. how we are, coming back to awareness, taking ownership, and mastering our inner world. It's just like our Vedas also say, like, I'm not broken, I'm whole. Yes, This is like how we grow with that, very and true. healing begins the moment we stop searching outside, as you mentioned, Absolutely. start listening inside, like what is Yes. going inside, like. So Yeah. thank So you so much. before I end, I just wanted to say only one thing, Preeti, that women, especially who are listening it. So in fact, in your question, I think this needs to be. I should have said that why women? Because women have the power to change the world. And when I say the army, I am willing to create an army of women, the conscious women who are ready to change themselves and bring the change. जो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, हम एक्चुअली इस दुनिया के लिए एक कल क्रिएट कर रहे हैं, टुमारो बी कॉन्शियस व्हाट कल आई एम क्रिएटिंग. सो इफ यू आर पुटिंग दैट कंपैशन, सो अगर आप कंपैशनेट लीडर्स क्रिएट करोगे तो आप सोचो दुनिया कहाँ जाएगी. So we need to create all of us the compassionate leaders. Yeah, thank you Yeah. so much. Yeah, I completely agree. I always say that women's ladies हैं वो घर का वो पूरी अपनी जनरेशन को जनरेशन एक नहीं है वो दो दो नेक्स्ट दो जनरेशन उसके साथ डिपेंडेंट होती है। आज उनके बच्चे हैं जो आगे देना है अपने बच्चों को वो सेकंड जनरेशन है। तो आपका कहीं न कहीं जो आप टीच कर रहे हो तो दैट्स मेकिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर फैमिली। सो दैट्स Yeah, thank you so ऑसम much. Yeah, thank you एंड so much, everybody. Thanks for थैंक attending this and taking out time. So, thank you, थैंक यू Preeti. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. So just remember who's listening, everyone, whether you are a professional, parents, or a leader, or someone quietly carrying a lot. Remember this ancient truth for the our Vedas. Lift yourselves or yourself by your own awareness. And one thing we need to understand, you are not weak. You are just feeling tired. You are not behind because you feel overwhelmed. Your system is not failing. It is just asking the alignment. And if something from today conversation stayed with you, don't rush to fix it. Sit with it. Let's settle it. And because until next time, heal with awareness, align with responsibility, and thrive through mastery. I'm your host, Coach Preeti Gang, and this is the Heal, Align, and Thrive Show. Thank you, everyone.